everyone, how are you? So today we discuss about those questions which is definitely put up in the interviews and on a behalf of string, then array, or then we have loop. The most important topic in JavaScript, right? So हर एक interviews में हमें मिल जाते हैं questions. So let us see or how we can handle those questions. So make this sense, right? So we're just adding the script over here in JavaScript, right? So simply so does console something to find the getting outputs or not. Console is working fine or not. So hello world. So hello is perfectly getting output, right? So console हमारा अच्छे से work कर रहा है. So very first question on a behalf of string or so we have to count some characters, right? So we have to count the characters. So we have two type to their concepts, right? So first we have to write the count the context in particular string. So let us we are creating let string let str let str equals to we are defining here a character right now here, right? A d whatever we might pass, right? So if the count should double we're getting the increment, right? तो हमारे पास हमारे string में और multiple characters same नाम characters अपने पास हैं, right? We can add those content and we can find the number of characters are in string, right? जो हमारे पास doubled है, right? So, एक से ज़्यादा जो characters हैं वो हम find कर रहे हैं एक string में से. So A, B, A, something capital D, and then we are passing small d. So this kind of we are taking string here. So what we can do is simply, so I'm creating function, it's count characters. We're creating arrow function here. So I'm defining this variable inside the function. So let count start from easily. Let's start the counts. A equals to इसको मैच दे देते हैं, right? So as so count A equals to we are defining start from initially 0. Letting using for loop here. So let iteration start from initially 0. The condition is I as dot length. As is nothing are string. As is nothing are string. Finding length, right?
So then we getting increment, so I plus plus. So condition is what? If the character, how we can find the character? So we can write the only variable as, right? So in this we are passing array indexing that is 0, right? So indexing that is 0, not I. So एवरी टाइम द जो हमारे पास जो भी हमारे करेक्टर्स हैं उनकी इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो से है, राइट? तो हमने आई यहाँ पे पास किया है स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट मीन्स वो हमारे सारे ही इंडेक्सिंग फाइंड करेंगे और चेक करेंगे एक लेंथ से, किसकी लेंथ से? स्ट्रिंग की लेंथ से, राइट? सब पे इटरेट किया जाएगा और फाइंड करेंगे डबल वैल्यूज़ है, अगर डबल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं सेम करेक्टर के, एक वापस करेक्टर वो यूज़ किया गया है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको क्या कर देगा? उसको इंक्रीमेंट कर देगा, उसको ऐड ऑन कर देगा. सिंपली वी आर डिफाइनिंग हेयर कि is equal to start from zero initially, or we are defining triple equals to from equals to we are writing getting a. ठीक है? So in that we are pass count a plus plus, and same for another situation. So we are creating else. Else if we are also defining condition, so we are writing else if also. So else if so s that is length r string, right? So in that we finding again d equals to what? D, capital D. So count, okay, count we are not creating count D, we create increment. So count we create increment, so let us create the let count D equals to 0. So just return something. So return what? We are returning count A and count D. Make sense? Count A and count D. So console getting output, right? So we are just calling the console में हम इस function को call कर लेते हैं particular console में. So log में we use consoling the particular function here. So function name is what? That is count character. That's the case. So we are getting 1 and 1 कि हमारे पास कैपिटल A जो है ना, वो भी एक ही है और D भी कैपिटल लिखा है एक ही है, तो इंक्रीमेंट होके नहीं आया वैल्यूज. अगर हमारे पास, मैं लिख देता हूँ वापस A यहाँ लिख रहा हूँ और वी आर राइटिंग सेम थिंग, राइट? मैं वापस सीधे लिख लेता हूँ D. राइट नाउ वी गेटिंग यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट 2 राइट? दैट्स अ केस कि वो इंक्रीमेंट कर रहा है. मान लीजिए मुझे इसमें बोला कि सर मुझे तो इसमें ना अगर A हो, कैपिटल A हो, या फिर एंड स्मॉल a b हो, तो व्हाट वी कैन डिफाइनिंग, वी आर राइटिंग जस्ट एंड ऑपरेटर है. सेम कंडीशन पास कर लें, i इक्वल्स टू व्हाट? वी आर राइटिंग जो स्मॉल a b हो, है ना? दैट्स द केस वी कैन डिफाइन आल्सो स्मॉल d. आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास? 0. वाई 0? यस. और गेटिंग वी राइटिंग एंड ऑपरेटर, राइट? वी राइटिंग और, है ना? दैट्स द केस. सो गेटिंग 4, है ना? तो हमारे पास कैपिटल A और स्मॉल दोनों काउंट कर लिया है और हमारे पास खाली अब यही अपने पास स्ट्रिंग है.
तो डेफिनेटली ये कैपिटल और स्मॉल दोनों काउंट करेगा, तो हमारे पास जो काउंट आएगा दैट इज 2 2, राइट, दैट्स द केस। स्मॉल भी फाइंड आउट कर लिया उसने और कैपिटल वाला भी इसने फाइंड आउट कर लिया है, दोनों ही हमारे अल्फाबेट फाइंड आउट हो चुके हैं यहाँ से इन स्ट्रिंग। Do the syntax, then move to the next question. Make sense? So next question अपने पास है, then in that we have always a pattern question, बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में लूप के बिहाफ पे, है ना, कि पैटर्न्स क्वेश्चंस होते हैं और प्रिंट दी सम पैटर्न्स ओवर इट, तो एक पैटर्न में प्रिंट करना है, राइट। सो अभी पैटर्न अपन देखते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया है। देन मूव टू द पैटर्न्स। Okay, so let's create the another question here, so that we have I'm just removing this syntax right now from there, and let us create this another syntax for this. So same, so const we are creating, so let us create the first keyword we have to execute. हमें execute क्या करना है, हमें execute करना है 1
space 2, 1 2 1 space 2 space 3, like, and that is pattern is 1 space 2 1 space 3 space 4. So like that we are creating multiple, right? So हमें इस तरीके से हमें एक पैटर्न क्रिएट करना है with the help of loop. So we are defining some const rows equals to स्टार्टिंग हमें एटलीस्ट हमें 10 तक प्रिंट कराना है, 10 लिख लेते हैं, राइट? वी वांट टू 10 तक प्रिंट कराना है. सो सिंपली वी आर डिफाइनिंग हियर अ फंक्शन क्रिएटिंग. सो फंक्शन वी कैन क्रिएट एंड हम वी कैन आल्सो क्रिएट द फंक्शन से कर सकते हैं, और हम सिंपली इसको वेरिएबल से भी कर सकते हैं. हम डायरेक्टली यूज फॉर लूप हियर. सो इन दिस फॉर लूप वी आर पासिंग कंडीशन सिचुएशन व्हाट, दैट इज let I equals to 1, right? We are defining iterations for start from only 1, and the condition is what? The condition is what? I equals to what? Rows. तो rows लिख लीजिए, डायरेक्टली वी कैन ऐड दी 10, है ना? तो rows मैंने डिफाइन कर लिया है. सो लास्ट में इंक्रीमेंट. So simply in this we are creating another loop here, that is called nested loop to iterate, right? So parallelly you have to use the nested loop here. So for loop again we passing inside the same and defining some, that is let j equals to, again defining from 1, and let and j equals to I, at last j plus plus. So let me create the variable here. So let pattern equals to empty, ठीक है? So pattern equals to what? We are using plus, right? What plus? अभी हम पहले कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं, और वी आर डिफाइनिंग वैल्यू दैट इज j, है ना? एंड प्लस string, isn't it? So at last log particular thing. So console. So what are we consoling? We console the pattern here, isn't it? So now we're getting output like that. So 1 2 3, like getting pattern over here, but still there is no gap between the characters. So how we can do? Simply we can space it out here, कि every particular pattern they getting this space. So plus, make sense? तो 10 तक बना क्रिएट किया हमने, आपको इसको 10 20 whatever we can create the same pattern. Do this pattern and move to the next questions. And this is simple loop we are using, and then we have 2D and 3D loops inside the particular JavaScript. So इसके बाद हम एक 2D क्वेश्चंस करते हैं array का.
Done. So let's move to the another question. So we have array. So we have to destructure the array, right? So array को destructuring कर रहे हैं with the help of this loop. So destructuring के लिए definitely they provide the question right in interviews, right? कि destructions कर दीजिए, हमारे पास 2D array है, उसको आप एक single array में convert कर दीजिए, right? और उसको आप multiple elements को fetch कर destruct कर दीजिए, right? तो when we are using यहाँ पे nested loops also there, right? So हम loops use करेंगे और अगेन वी आर डिफाइनिंग यहाँ पे वैल्यूज अपने पास बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या है लेट ए आर इक्वल्स टू वी डिफाइनिंग एरे एंड इन दिस एरे वी पासिंग अनदर एरे इन दैट वी वैल्यू व्हाट फर्स्ट वैल्यू शुड बी लाइक 1 comma 2 वी क्रिएटिंग another value here at 2 3 4 again we are creating another value like 5 6 ठीक है so there is a 2D array that is 2D array. So in this array we can solve how we can do simply we creating a loop here. So for loop we are using so let I equals to start from initially start iterate from 0 and we defining the condition is what if the I right is greater than equals to AR length, right? AR length dot length we are defining so I plus plus. So again we creating for loop again the same. So condition is what let j actually start from 0 and we defining j is less than equals to I. So ARI, so ARI dot length. Then we have to implement j plus plus. So log कर लेते हैं so log AR है ना that be passing I and j so I and j simply we getting 1 2 3 4 5 6 right isn't it. So what they remove the यहाँ से remove the arrays and define into single values they iterate in the loop or every they getting an every line right. So 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है right they getting in this sense that by default is in an array में array that is called 2D array. if इस array के अंदर दोबारा array that is called 3D array है ना. So that's the case. So try to implement this.
डन, मूव करें। सो आई होप आप लोगों ने लिंक से ज्वाइन कर रखा है सबने। सॉर्ट so let us see, let we have a simple question, right? Sometime we confusing that concept also. We have to concate something, so we have to concate something, right? So if we have two strings or two arrays, or we want to concate the values, so how we can do? If we have let str equals to something, so live, ठीक है, and then let str1 equals to, we are defining session. So simply if we have to concat this particular thing, right? So हमें एक string में convert करना है, concat करना है. Simply we can use the concatenation method. So how we can do? So let we are defining also directly हम console में कर सकते हैं, but we are defining in a particular variable. So we can store the values in variable and we can execute the syntax. So let result equals to, so str dot concat. So str1. So we are concating from str1 to and str1, ठीक है, str से str1 से concat कर रहे हैं. So log कर लेते हैं, getting output of browser on console. So result, so getting live session, but they have not gap between them, right? So what we can do, simply we get the space around the after the live. So we're getting live session here. That's the case. Then in another question we have, if we have array, or we want to find the largest number of particular array, and the most important question, or every interview should be asked this question, right? So most of interviews में पूछा जाता है कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो एरे में से और डुप्लीकेट्स निकाल दीजिए. So that's the case. So let us create with this, हम पहले हम करते हैं. So we have a very array, so let ar so we have array values पास कर लेते हैं, something कुछ भी. So we have a random array, right? So we want to find the largest number from this particular array. हमें इसको रिटर्न क्या करना है, हमें largest number रिटर्न करना है from this array. So simply what we can do is simply creating the loop here. So let assume, so let largest equals to ar empty 0. तो what is this? This is a particular indexing. तो हमने क्या assume कर लिया है कि जो largest वो क्या है, ar, इसकी indexing 0 है, मतलब 45, right? We are assuming. So let us create the for loop here. So to create this particular, all these particular values, so we are using let I equals to start from 1, and we're defining I to ar
dot length, then I increment. So if कंडीशन लगा लेते हैं, if so ar I is equals to largest. So what we print, we print the largest equals to ar, that be passing I. So let us console this. So log largest, isn't it? Or what we can say, we can simply define the string here. This is the largest number, ठीक है. So let us see output. We're getting यहाँ पे 550. If we're removing this 0, so what is largest number is? That is 78. So is it getting 78? That's the case. Do the syntax. Sort. So next we are finding duplicates from the array. It means जो same value, same characters repeat हो रहे हैं, same number repeat हो रहे हैं, we are just removing those particular values, returning those values, right? जो वहाँ पे duplicates हैं उनको ही हम return करने की try करेंगे. So you are finding. So I hope this question is done from your end, getting outputs, all of you.
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. आई एम जस्ट क्रिएटिंग हियर. सो let ar1 equals to, we're defining array and we are passing values like 4, 2, 14, 40, 44, 7, 78, 4, then 2, 1, 0. I'm not passing 0 here right now. 9, and again we're passing 1. So that's the case. We're creating variable यहाँ पे. We are creating the random numbers. We pass numbers. We're storing just random numbers in particular array. So let us create the let duplicates duplicate equals to empty array. So we're storing this all this value. We're pushing this all this value in particular this duplicate variable, and we're getting the output of the particular graph of duplicates, right? So हम इसके यहाँ push करेंगे और यहाँ से include करेंगे, ठीक है? So for loop we are using. So loop initially start from, we are defining I start from. So let I start from 0 initially, and I less than equals to length ar dot length ar1 dot length we have to use. So I so in this we passing an a nested loop here. So let j equals to start from again I plus 1. So j ar1 dot length, we are creating length, and j plus plus. So condition is if ar1 I is triple equals to, we are using ar I, right? अगर ar1 जो है, right, उसको जो ar1 से इक्वलेंट है ना, तो हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है I और j, है ना. I से और j से क्या है, इक्वलेंट है, राइट? और एंड नॉट डुप्लीकेट्स, है ना, डॉट इंक्लूड्स. सो वी नो इंक्लूड मेथड इन पर्टिकुलर एरे, राइट? सो इंक्लूड्स फाइंड करेगा कि वो वहाँ पे कैरेक्टर इंक्लूड है तो ट्रू, वी गेटिंग इट, और अदरवाइज वी गेटिंग फॉल्स, तो हमारा वो एड ऑन नहीं होगा. सो ar1 I and this particular console, so duplicate dot push. क्या पुश करना है अब डुप्लीकेट्स में, क्या पुश कर रहे हैं हम? पुश कर रहे हैं ar1 that is I. So console duplicates.
एरे में मिलेंगे राइट, हमने एरे में पास की स्टोर की तो ऑब्वियस एरे में मिलने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग 4 to 45, they are what the three items are remaining here only. And if we are consoling, right, what we are consoling, तो हमारे पास यहाँ पे 45 43 is remaining is here, 4 to 45. Let me check, include this thing, array. log इसको करते हैं log, okay, we writing ar ना, तो ar1 we should write, that's the case. So right now is 4 to 1 in particular this array, and initially we have 4, we have 11 values, right? We have 11 elements in particular array है ना, by default जो लेंथ है अपने पास. बट इन दिस केस जब हमने इसको क्या किया है, रिटर्न किया, डुप्लीकेट्स रिटर्न किया है, तो वी वी गेटिंग यहाँ पे 4 2 1, ओनली 4 2 1 आर डुप्लीकेट्स, राइट. सो यही बार बार कॉपीज हो रहे हैं, बट बाकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, सिंगल टाइम ही यहाँ पे स्टोर्ड है. डुप्लीकेट्स वी गेटिंग, सो ट्राई टू कंसोल इट. अभी जो हमारे पास ये कंडीशन है जे लेंथ फाइंड कर रहे हैं, अब नेस्टेड लूप कैसे यूज़ किया जाता है, टू कंपेयर दी, पहले एक बार इटरेट होगा, दोबारा फिर इटरेट होगा, राइट. तो इनिशियली हम स्टार्ट किए 0 से, ठीक है, तो ऑब्वियस वो पहले रन कर जाएगा, और जे हमारा बाद में रन कर रहा होगा. हमने 1 स्टार्ट किया ताकि कंपेयर टू दी सेम वैल्यूज़, ताकि हम दो एक ही वैल्यूज़ पे दो बार लूप लगा रहे हैं, तो कंपेयर दी वैल्यूज़, तो कंपेरिजन करने के लिए, इटरेट करने के लिए एवरी एलिमेंट के लिए वी आर यूजिंग नेस्टेड लूप्स, राइट. उसमें हमने बोला है कि कंडीशन इफ अगर ए आर जो आई है, राइट, जो आई की वैल्यूज है, आई मीन इट मीन्स व्हाट इज 4 to 40, राइट, दीज ऑल आर दी आईज, ठीक है. वो ट्रिपल इक्वल्स टू किसके हैं, जे के आई के, है ना, जे के इक्विवेलेंट, राइट, मतलब जे से वापस जो इसी पर्टिकुलर ए आर वन पे लूप इटरेट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट है, राइट. तो वी गेटिंग व्हाट, इंक्रीमेंट, वो वैल्यूज मिलनी चाहिए. एंड अगर ये है तो ठीक है, अगर एंड साथ में क्या चेक कर रहे हैं कि नो डुप्लीकेट्स, राइट, अगर नो डुप्लीकेट्स है इंक्लूड्स, ठीक है, इन पर्टिकुलर आई, तो इट्स प्रिंट. सो वर्ड की हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डुप्लीकेट्स में पुश कर रहे हैं ए आर वन को आई, तो आई इज नथिंग, जो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस एरेज की वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, तो हमारे पास उसको पुश कर रहे हैं, दोस्त पुश कर रहे हैं जो हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं, है ना, वो हमारे पुश हो गए, हमारे पास कहाँ मिल रही हैं, हमारे डुप्लीकेट वाले वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं. एट द एंड वी डिफाइनिंग एम्प्टी एरे हेयर टू स्टोर दोज वैल्यूज, दोज एलिमेंट्स इनसाइड द पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट. तो आपने यहाँ पे स्टोर किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया है, तो यहाँ हमने पास किया है, पुश किया है बेसिकली, पुशिंग दी ए आर वन आई, राइट. सो हम यहाँ पे इटरेशन वो पुश कर रहे हैं जो हमारे इसके क्या है, इस कंडीशन से रिलायबल है, गेटिंग सेट दी duplicates in, make sense. By default we have 11 elements inside the particular array, it means the length of particular is particular only 11 only, ठीक है. तो हमारे पास अभी जो duplicates there are 3 only, 4 2 and 1, make sense. और कुछ भी ऐड ऑन करेंगे तो उस अकॉर्डिंगली हमारा वो भी हमारे ऐड ऑन होगा. Do this.
अभी एक क्वेश्चन और अपने पास और है हमें स्ट्रिंग के अंदर ही। तो हमारे स्ट्रिंग में कुछ आप स्ट्रिंग लिख रहे हो राइट, और दैट इन करेक्टर वाइज। तो हमें काउंट्स करने हैं एक्रेंस, मतलब कि एक ही स्ट्रिंग में मल्टीपल करेक्टर जो आ रहे हैं उनका काउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे भी करा था ना, काउंट किया था ना, करेक्टर्स काउंट किया था, सेम एज इट इज वो कर रहे हैं, बट देयर केस डिफरेंस, बिग डिफरेंस इन पर्टिकुलर द क्वेश्चन। So I hope we done this question. Shall we move next one? Right. So we have a string. तो मैं इसको लेता हूँ let str equals to, we are defining something else, जो भी आप पास करना चाहो पास कर दीजिए। So hello, मैं hello ही ट्रेड करा रहा हूँ, we are trading hello। So const count equals to, we are defining empty object here। So using for loop here, for of we are using, and we are defining let character of particular object, that is str we are defining। So count the character equals to, we are defining count character। So or if is it 0, so plus 1। So let result equals to empty string we are defining, or const keys object dot keys, we can pass count and we sort the particular count, so dot sort। So for loop we are using for of, so let keys inside the of, so let char of keys, so if count vector is greater than 1, greater than 1, so what we have to do, we have to just pass the result, so we have to restore the result equals to, and plus equals to, right, so plus we are defining plus equals to character plus count। So at last we just console the result, so console result, so let it be getting यहाँ पे 12 here, why 12 here,
happened? Object है, so we counting this particular each and we passing setting of this particular this string plus one result dot keys, that is count object 0 object short charos of keys count 4 listen 0 getting one or two. Okay, so we have only hello, they had two characters ll. What is happening? One sec, try to run this particular again. Perfect, now getting perfect, right? So character we getting a aman, right? So अभी a कितनी बार अपने पास आ रहा है? In this a getting two times, right? So is getting two times. So if we are writing another things, so aman दोबारा aman में लिख देता हूँ, right? So if in this case, so we're getting a is four times, m is two times, and n is two times. That is the case. Make sense? Try to execute this syntax. ये क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ना, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट इसलिए किया था, हमने वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट कीज, तो हम कीज ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट में की हमने स्टोर की, पहले हर एक कैरेक्टर को स्टोर किया, उसमें ट्रेड कराया लूप से, एंड एवरी लूप हैव गेटिंग, अगर वो गेटिंग है तो उसमें प्लस वन कर दो, राइट? अगर जीरो इक्वलेंट, और अगर और हमने जीरो लिखा है ना, एक ही भी नहीं तो डेफिनेटली जीरो, और अगर हमारे पास है तो प्लस वन कर दीजिए उसको, इंक्रीमेंट हो गया, वी गेटिंग दी वैल्यूज. दैट्स द केस. दिस स्ट्रिंग. So this type of questions in mostly put up in an interviews, right? So sorting and arrays, in arrays the remove the duplicates, largest number, second largest number, find smallest number, and similarly in string we have concate the strings or iterate the strings. In that we have also in arrays we have 2D arrays or 3D arrays. So mostly was put a portion put about in particular those topics, right? And some of the case of particular in array they have only, if you're talking about strings or array, they have pattern question also, right? So mostly in interviews those questions are put up in interviews, in every interviews, not in कि कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू में हमारे पास, जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, टेक्निकल राउंड में बैठते हैं, तो आपके पास ये क्वेश्चन पुटअप किए ही जाते हैं, राइट? रिपीटेड क्वेश्चन जो जो हमने डिस्कस अभी किए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? वो यूजुअली हर सिनेरियोज में पुटअप क्वेश्चन हो जाता है, तो मैंने वही क्वेश्चन रिलेटेड यूज़ किए हैं, ठीक है? In next session we are working on some more questions on behalf of this particular topics, right? So I hope you guys getting some new कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, कुछ नया टॉपिक सीखे होंगे, right? How we can iterate the loops and all. So this is a case, and
Bye bye guys, we'll meet in the next session. Bye bye, take care.